the topic which was remaining. So let me write the formal statement of the theorem. It states that yes. यूनिट 2 है ना सर? जी सर नेचुरल पैरामीटर अलोंग सी तक आपने लिखवा दिया था इसको। हाँ, नेचुरल पैरामीटर्स अलोंग सी, हाँ अलोंग सी फंडामेंटल, हाँ तो मैं शॉर्ट में मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट देके प्रूफ करूंगा, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम फॉर स्पेस कर्व्स। इसका स्टेटमेंट मैंने लिखवा दिया था आपको। अलाउ तो सबको कर दिया, somebody asking allow me. So statement was let kappa s and tau s, they are some arbitrary continuous functions. They are some continuous functions. Then theorem states that there exist except for their position. Except for position in space. One and only one space curve, or you can say a unique space curve. A unique space curve for which kappa s is the curvature. Kappa s is the curvature and tau s is the torsion. And s is the natural parameter. वो आपको पता ही है हमेशा। I have considered as a natural parameter. S is a natural parameter. Means arc length parameter along C. Or you can say, और ये भी कह सकते हैं, the theorem states that the curvature and torsion may be prescribed as functions of the arc length. As the functions of the arc length. Arc length. So this is the statement. Look at the proof. So in the proof, there are two type of proofs of this thing. First proof which I am doing, this is the proof which was done by late Sir Izar Hussain साहब, जिनके मैंने आपको नोट शेयर किए है ना. And the another proof is by Professor Bakar sir, who has proved it in his video lecture. वो मैं आपको शेयर करूंगा. तो first proof which I am going to do here, what the supposition is that we suppose that एक supposition लेंगे हम, a condition on the functions. We suppose that the functions are analytic. ये functions अगर analytic है, अब you can ask कि सर इसका मतलब कि ये क्या थ्योरम सिर्फ एनालिटिक फंक्शंस के लिए प्रूफ है? एनालिटिक फंक्शन मींस व्हाट? A function which you can expand by Taylor's theorem.
More about analytic functions you will be studying in your complex analysis. A function is analytic if it is differentiable at a point and its neighborhood. उसे हम analytic functions बोलते हैं. ठीक है भाई? If you have a function, so basically differentiability you check at a point. What is the where you check differentiability of functions? At a point. Students. जहाँ पे कंटिन्यूअस होता है नहीं कंटिन्यूअस होता है उसके बाद जो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो वी बेसिकली चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट एंड वी से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए. If you are checking differentiability at a point and plus its neighborhood also, and the function is differentiable at a point and its neighborhood, then we say that function is analytic. So it is another special class of functions. So every differentiable function need not be analytic at a point, but every analytic function is a differentiable. Because if some function is analytic, it means what? It will be differentiable at a point and its neighborhood also. किसी पॉइंट पे और उसके नेबरहुड पर डिफरेंशिएबल होगा, उससे हम एनालिटिक बोलेंगे. So here we are supposing that the functions are analytic. So if function is analytic, then any analytic function can be expanded in the Taylor series form. That means then any function, the functions को I am assuming by RS, arc length parameter में, then RS can be expanded in the neighborhood of short neighborhood NBD, neighborhood of a point, some point S is equal to S naught as follows. इसकी अगर मैं टेलर सीरीज एक्सप्रेशन लिखूं, I am writing here. So what I can write, R of S is equal to R of S naught. This आपकी टेलर सीरीज होती है fx is equal to fa plus h f dash x and so on. I am writing the parametric form of this Taylor series for a function Rs. So Rs plus h r dash s naught plus h square by factorial 2 r double dash s naught plus h cube upon factorial 3 r triple dash s naught and so on. This can be done only when your function is analytic and you have a differentiability at a point s naught. Then I can use r dash r double dash, provided the series is convergent. सर ओरिजिन पे तो सर डिफरेंशिएबल होता नहीं है फंक्शन, तो सर ओरिजिन पे थोड़ी निकल पाएगा ये. किसने कहा ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है? क्या एक ही फंक्शन है दुनिया में सिर्फ? कोई पॉलिनोमियल ले लो आप xn, ये हमेशा डिफरेंशिएबल है एवरी पॉइंट. सिर्फ mod x ऐसा फंक्शन है जो ओरिजिन पे नहीं है. ओके सर. और क्या? Function can be differentiable, depends on the function. Polynomial is differentiable everywhere. Sin x, cos x, exponential x, they are differentiable. कुछ different functions हैं, f(x) equal to mod x है या 1 upon x है. So we have to check. So here we can write this as a Taylor series expansion, provided the series is convergent. It should be converged, है ना? तब हम हर फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं. जो आपके sin x, cos x, exponential x जो फंक्शंस की सीरीज आती है, क्या आप e के पावर x को ये लिख देते हैं 1 plus x, it is coming from the Taylor series. It is a particular case when we are expanding about origin, it will become Maclaurin series. The Taylor series
gives you the expansion of every function, fx, sin x, cos x, log 1 upon log 1 plus x. ये सारे फंक्शन के एक्सपेंशन कहाँ से आए? तो आप फॉर्मूला लगा देते हैं फॉर sin x इक्वल टू x minus x cube by 3 and so on. या x minus x square by 2 जो भी एक्सपेंशन है उसका. So these things are coming from this. You have studied in calculus as well as in advanced calculus several times, है ना? So provided this convergent, okay? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. और RS can be written as, इसको मैं और सॉल्व करके लिख सकता हूँ, R S naught plus H. अब you know R dash S naught will be what? It will be some tangent vector T. R dash is what? T, है ना? Similarly, Yes, sir. H square by factorial 2. R double dash is what? R double dash means T dash by the Kappa CD n. Freire formula, kappa n Kappa n. plus S cube by factorial 3. What about R triple dash? We have solved for R triple dash. It was coming minus kappa square T. This exercise we have done plus kappa dash n plus kappa tau b and so on. The point is, every dash we have done a result that R to the power dash, double dash, triple dash, 4 dash, in fact Rn can be written as a linear combination of T, N and B, है ना? ये हमने एक रिजल्ट किया था. मैंने R4 dash निकाला था. Then we came to know that every R dash, even R to the power nth derivative, can be written as a linear combination of T and B. टर्म्स को हम अरेंज कर लेंगे तो आपका ये हमेशा इस फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो every term I can write in this form and so on. So here you can see, if it is some equation 1, so where all the terms, where this all the terms can be obtained by differentiating the Freire formulas. जो हमने फ्रेयर फॉर्मूलाज लिखे थे, है ना, मतलब ऑल टर्म्स जो आगे टर्म्स आएंगे, अगला टर्म क्या आएगा R4 डैश 5, तो उन सबको हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रेयर फॉर्मूलाज. क्योंकि फ्रेयर फॉर्मूलाज में क्या था आपके पास? फ्रेयर फॉर्मूलाज में आपके पास T डैश था, N डैश था, B डैश था. तो ये T डैश N डैश आएंगे, उनकी हम वैल्यू पुट करते रहेंगे. तो एवरी टर्म विल बी कमिंग इन टर्म्स ऑफ T and B, and as well as T and B, T and B, your trihedron, finite trihedron, and the point RS naught. RS naught क्या है? It is the position vector of the curve at a point S naught, and RS naught are supposed to exist. ये हम मान के चलते हैं, they are supposed to exist. They will be existing, है ना? Because why they are existing? That because we have already supposed that they are analytic. तो analytic है तो ये सब टर्म्स एग्जिस्ट करेंगे आपके, क्योंकि डेरिवेटिव्स आ रहे हैं तो दे विल बी एग्जिस्टिंग, है ना. एनालिटिक का क्या हुआ? योर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. सो T is R dash and is your R double dash in something and B is what mod जो फॉर्मूला था उसका, तो they will be existing because of the analytic character of the function. So it means what? If we choose an arbitrary point, if we choose an arbitrary point RS naught,
then an arbitrary set of three perpendicular unit vector, then an arbitrary set of three perpendicular unit vectors. If we choose an arbitrary point and an arbitrary set of three unit vectors. As T, N, and B. Then this equation 1 represents, determines the curve uniquely. Okay, यही हमें प्रूफ करना था. Means what? Because your T and B are is not they are existing. तो if अगर मैं कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज करूं, है ना, क्योंकि T आपका कहां पर आ रहा है, यू आर फाइंडिंग एट सम पर्टिकुलर पॉइंट. तो अगर आप कोई पॉइंट एस नॉट चूज करेंगे तो आपकी जो टर्म्स आ रही होंगी, एवरी टर्म दिस विल बी अ यूनिक टर्म. ये जो सब एन आ रहा होगा, ये दे विल बी यूनिकली कमिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट फॉर द कर्व, है ना. इट मींस व्हाट? एंड दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ योर आरएस रिप्रेजेंटिंग अ कर्व. सो इट मींस every RS can be expanded uniquely as a Taylor series, or you can say every RS can be represented, you can determine a curve uniquely. Is it clear? So this happens only when we are considering the analytic function, analytic character. Because of this, we are sure that all these things will be existing, all the terms will be existing. क्योंकि अगर इसमें कोई term exist नहीं करेगा तो I cannot expand in a Taylor series function. लेकिन the point is that if the function is not analytic, then what? उस केस में I cannot apply this approach. Then there another approach which has Vagar sir explained. I will share with the lecture where they are taking the approach of uniqueness and existence solution of the differential equation. वो चीज आप वहां देख सकते हैं कि function is not analytic. So don't keep in your mind that only for the analytic functions this fundamental theorem for space curve is true. In fact, it is true for all the curves. Okay. So it was the last topic of unit 1. Let us start unit 2. Unit 2. So unit 2 is what now? Unit 2 we have surfaces in R3. अभी तक आपने पढ़ा space curves, है ना? Space curves means curves in R3. Space curve क्या था? Curves in R3. Now we have सर उस पे क्लासरूम पे जहाँ तक आपने कहा नोट्स भेजने के लिए, उसके आगे से भेजेंगे नहीं भेजेंगे? आप भेजिए, जिन दो लोगों से कहा है. किसी से कहा था मैंने लास्ट क्लास में? जी ठीक है. कौन कौन लोग थे? सर एक तो मैं था, एक मुस्तफा था, एक बशर था. हाँ, तो दोनों लोग शेयर करेंगे. सही है. मतलब आपने सर वो कहा था ना उस प्लेन तक भेजना था, वो भेज दिया सर था आपने हमने. ऑक्सीलेटिंग प्लेन तक कहा था सर, वो तो भेज दिए थे. कौन से? ऑक्सीलेटिंग आगे प्लेन तक कहा था ना आप. उसके आगे यूनिट 1 तक कंप्लीट करके भेजने आपको. मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को नहीं बताई बात, ये किस लेक्चर शेयर ये नोट्स नहीं बनाने सर. अच्छा, चलिए तो दूसरी क्लास में बताया होगा. आप लोग जो है अब आगे नोट्स बनाए. यूनिट 1 कंप्लीट हो गई आपकी, तो यूनिट 1 तक के नोट्स सारे जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी है उसमें है. कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको मैं लेक्चर नोट शेयर किए हैं, पीडीएफ फाइल जो होती है वो, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं एक्सरसाइजेस चैप्टर्स के बाद. कुछ मैंने यहाँ कराई हैं, कुछ मैंने नहीं कराई. Just take all the problems and solve by yourself, by your discussion, and share the PDF file in Google Classroom. So next idea we have surfaces in R3. सरफेस का आइडिया, अब जैसे आपने कर्व का आइडिया लिया, कर्व का आइडिया क्या था कि इफ यू हैव अ लाइन, है ना,
इस लाइन को अगर मैं मैप कर दूं R3 में, तो इट वाज बिकमिंग अ कर्व व्हिच वाज अ स्पेस कर्व, तो था बाय सम कंटीन्यूअस मैप. नाउ सरफेस मींस सपोज यू हैव अ रेक्टेंगल. आई एम टेकिंग अ रेक्टेंगल. जैसे आपके पास कोई शीट ऑफ पेपर ले लें. दिस इज अ रेक्टेंगल, है ना. इट हैज सम लेंथ, इट हैज सम ब्रेथ. ओके. अब इस रेक्टेंगल को अगर इफ आई एम आस्किंग कि जस्ट डिफॉर्म दिस रेक्टेंगल, जैसे आपके हाथ में एक पेपर लो. अगर ये पेपर आपका प्लेन कॉपी पे रखा हुआ है तो इट इज अ रेक्टेंगल ऑन द प्लेन. बट इफ आई एम सेइंग कि जस्ट डिफॉर्म दिस रेक्टेंगल, डिफॉर्म का मतलब इसको थोड़ा सा कर्व इस तरीके से कर दीजिए, लाइक दिस. इसको यूं मोड़ दो ऐसे करके. ओके, कर सकते हैं डिफॉर्म. सिलेंडर बन जाएगा. सिलेंडर नहीं, बस सिलेंडर. इतना डिफॉर्म, बस चिपकाना नहीं है, बस इसे डिफॉर्म कर दो ऐसे हल्के से कर्व कर दो. तो अब क्या हुआ, अब ये आपके पास इट इज नॉट अ प्लेन कर्व. यू कैन नॉट रिप्रेजेंट इट इन अ प्लेन. जैसे ही आपने शीट को डिफॉर्म किया, A4 शीट पेपर को या किसी भी पेपर को या किसी डिस्क को, है ना, जब आप इस तरीके से मोड़ेंगे, मैंने कहा इसको पेपर को ऐसे हल्के से मोड़ दीजिए, तो व्हाट विल हैपन, नाउ इट विल बिकम अ स्पेस कर्व, सॉरी सरफेस. अभी आपका इट इज नॉट R3 नाउ में इट पहुंच इज, गया सर. हाँ ये R3 में आ गए आप. इट इज नॉट इन R2. R2 में कब थे, जब आप रेक्टेंगल के ऊपर मूव कर रहे थे, तो ये आपके पास R2 की फिगर थी. लेकिन जब आपने इसे डिफॉर्म किया, इट विल बिकम अ फिगर ऑफ R3. इज इट क्लियर? सेम थिंग इट वाज हैपनिंग Yes, हियर. sir. हाँ, सेम थिंग वाज हैपनिंग हियर आल्सो. कि आपका एक लाइन था, अगर आप अब उसमें लाइन को अगर आपने R2 में करा तो इसको आप R2 पे भी कर सकते थे, कर्व बन जाता था ये लाइन R2 पे. लेकिन अगर मैं इसी कर्व को R3 पे करता था तो वो आपका स्पेस कर्व बन जाता था, है ना. ये R2 पे था. स्पेस कर्व में आपके पास ये लाइन R3 की हो जाएगी. यहाँ पर हमारा कर्व का रिप्रेजेंटेशन अलग था. वी आर यूजिंग 3 कोऑर्डिनेट्स. यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ पर किसी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन आपके पास ये होती थी, है ना. एक ही सिंगल लाइन थी, इसी को हम टेंजेंट बोल दिया करते थे. लेकिन यहाँ पर you don't have a line passing through a point, you have infinite number of lines. That's why we have to use the equation of a tangent line on a space curve. We have to use the definition of order जो हमने यूज करा था ना, which is fastest moving fastest, that is called a tangent, है ना. So here space curve में, so the formal definition is what, okay, you are deforming means what, you are using some map. Through a map you are projecting a rectangle from R2 to, sorry, from R2 to R3. Deformation means map, है ना, some map. So the definition is what, it is the idea of the surface, how the surface will be coming, है ना. And this need not be rectangle. आप कोई भी, जैसे बताया, आप डिस्क भी ले सकते हैं कि हम डिस्क खोले और उसे मोड़ दें इस तरीके से, डिफॉर्म कर दें कुछ, तो सरफेस बन जाएगा आपका. So set of points in E3, E3 means R3. बुक में आपके या E3 नोटेशन यूज कर रहे हैं. यूक्लिडियन स्पेस ऑफ डायमेंशन 3 है ना, R भी कहते हैं आप. E फॉर यूक्लिडियन स्पेस. A set of points in R3 which is continuous 1-to-1 correspondence with a closed rectangle in the plane is called a simple sheet of a surface. So if you remember when we started curve, so firstly I gave you simple arc. याद है, पहले हमने सिंपल आर्क डिफाइन किया था. सिंपल आर्क में क्या कंडीशन थी,
सिंपल आज बताया था, इट इज द कंटिन्यूअस वन वन मैपिंग, कंटिन्यूअस और वन मैप है ना, वही है। 1 to 1 होना चाहिए। हाँ, तो वही चीज यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक कंटिन्यूअस और वन वन मैपिंग है ना, विद तो सेट ऑफ पॉइंट्स इन आर, ये सब सेट ऑफ पॉइंट्स ही तो है जो है, ये सरफेस बना रहा है, तो अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन R3 व्हिच आर मैपिंग थ्रू अ कंटिन्यूअस वन वन मैपिंग सम f और जो भी g कह रहे हैं, है ना, विद अ क्लोज रेक्टेंगल, then this is called simple sheet of a surface. अब अगर मैं वन वन नेट हटा दूंगा, it is not वन वन, it will become a surface, simple surface, Yes sir. है ना, so that means you can say, so for simple sheet के लिए you need this one one correspondence, है ना, so you can say that means a simple sheet is the set of points, so इसको अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, so here that means a simple sheet is a set of points. Simple sheet means simple sheet of surfaces of a surface. Simple sheet is a set of points in E3 whose position vectors are the values of a one one continuous vector valued function denoted by R is equal to R of, देखो now in this you have two parameters, दो पैरामीटर्स है नहीं, देखो एक तो पैरामीटर ये है, अब अगर आप if you are taking this, तो here you can say u is lying between A to B, rectangle कब बनेगा, when you have length and you have breadth, rectangle ऐसे डिनोट करते हो क्यों भाई, Yes sir. what is the rectangle, if you like you have x 0 to 1, y 0 to 1, तो ये क्या बनता है, x 0 to 1 means ये 0 से 1 और y 0 to 1 means y 0 to 1, तो ये क्या होता है, बीच में पॉइंट्स है, तो ये तभी तो रेक्टेंगल बनता है, तो you have two parameters, मतलब two variables, so here it will be what, this will having two parameters u1 and u2, here for the sake of convenience I am using u1 u2 at a superscript upper script, है ना, because why I am using this, because you know if we write in subscript something, जैसे अगर आपको याद हो, अगर f1 लिखते हैं आप, तो f1 क्या होता है, del f over del x होता है एक्चुअली, है ना, so that's why to differentiating it with this notation I am using u1 u2, so u1 is the parameter, u2 is the parameter, okay, so that's why I am using the superscript, अगर मैं u1 u2 लिखूंगा तो in later I will have to use the partial derivative, तो मुझे इसमें कंफ्यूजन होगा, जैसे हमें r1 लिखना है तो r1 will be what, r1 will be del r over del u1, ठीक है, so that's why here we will be using this 1 2 as a superscript, okay, is it clear, yes sir Yes sir. हाँ, तो इसलिए हम यहाँ सबस्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे to differentiate this notation with this partial derivative solution, keep in mind, सीरियस कर दे रहा हूँ, okay, where this is defined, so a simple sheet of
function is a set of points in E3 whose position vectors are the values of a 1 continuous vector valued function R is equal to R of U1 U2 defined on a closed interval A U1 lying between A to B and U2 lying between suppose some C to D, है ना? And U1 U2 they are the parameters. ये क्या आपके तो parameters है ना? Defined on a means domain क्या है इसका? Defined on a closed interval means it is the domain. तो domain क्या हो गया ये? Rectangle. So domain is rectangle and image is coming in R3. It is so that means in rectangle here you are having some surface like this. So the position vector I can say if I am taking the position vector of some point here denoted by R, so it will be what? R is equal to R of U1 where A is lying between this and so it is the image of this. बोलिए. So that means we can say that a simple sheet of surface is obtained from a rectangle. That means intuitively we can say that a simple sheet of surface, a simple sheet of surface is obtained by how? It is obtained from a rectangle actually. Is obtained from a rectangle by stretching और squeezing, स्ट्रेच कर दें, उसे स्क्वीज कर दें एंड और बेंड कर दें और बेंडिंग. रेक्टेंगल आपको मैं अगर दूं उसे आप स्क्वीज कर दीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए, बेंड कर दीजिए, है ना, मोड़ दीजिए, बट विदाउट टीयरिंग और ग्लूइंग टुगेदर. लेकिन आपको उसमें से कुछ फाड़ना नहीं है और उसे आपस में ग्लू मतलब जोड़ना नहीं है. जैसे अभी आप कह रहे थे कि मैं आपको A4 शीट दूं, उस A4 शीट को आप आपस में ज्वाइन करके सिलेंडर बना दें, तो सिलेंडर इज नॉट सिंपल शीट, है ना. अगर आपसे मैं कहूँ ये एक पेपर है आपके पास A4 शीट का, आपने कहा सर मैं इसे मोड़ू ऐसे इस तरीके से और इसे एक हम क्या कर दें, एक सिलेंडर शेप बना दें इस तरीके से. अब यहाँ पे जब आपने ग्लू कर दिया तो यहाँ वन तो खत्म हो गई ना. क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट्स थे ये आपस में क्या हुआ है, सो इट इज नॉट वन. तो आई कैन नॉट ग्लू, आई कैन नॉट टेयर. आप कुछ टेयर कर दे इसमें से, आपने कहा सर 20 से हम इतना पोर्शन फाड़ दे, ओके. सो आई कैन नॉट डू दिस थिंग, बट आई कैन स्ट्रेच. इसको हम स्ट्रेच कर लें, इसे हम कुछ बेंड कर दें, जैसे मैं स्क्वीज कर दूं, कुछ स्क्वीज कर दूं इसको R3 में रख के, तो ये सब आपका ये सरफेस हो, ये सब सिंपल शीट होंगे क्योंकि 1s इज इंपॉर्टेंट. सो एग्जांपल यू कैन से अ सेट ऑफ फंक्शन, फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ फंक्शंस. सिंपल एग्जांपल है अ सेट ऑफ पॉइंट्स in E3 satisfying z is equal to fxy, है ना. अगर मैं z is equal to fxy ले लूं, where f is a continuous function, where f
is a continuous function. Continuous function of x and y and defined in a, कहाँ पर डिफाइंड होगा ये, रेक्टेंगल पे, defined in the rectangle. X will be lying between A to B and Y will be lying between C to D. This is a simple sheet of the surface. Of the surface. जैसे वहां पर आपके पास कर्व क्या था, ग्राफ जो लिया था मैंने, y is equal to fx. That was graph. So z is equal to fxy is a simple sheet of surface where this is a and to define all this rectangle. Is it clear? No. This is z is equal to x square Yes, plus y square. You know, you have it studied in your advanced calculus. Z is equal to x square plus y square. What does it represent? सर्कल सर्किल है ये तो. सर्किल क्या भी तीन Cylinder. इसमें होता है डिस्क क्या? z की पावर भी 2 है Cylinder. जिसके लिए सर डिस्क डिस्क जो है यार, डिस्क में क्या होता है, सिलेंडर सर सबकी पावर 2 होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और डिस्क और सर्किल जो आप नाम ले रहे हैं ये सारे प्लेन कर्व्स हैं. वहां पे z का क्या रोल होता है? z का कोई रोल नहीं होता प्लेन कर्व में. यहाँ पे z आपको इतना बड़ा नहीं दिख रहा है, तो सर्किल डिस्क कैसे हो सकता है ये? सर कौन? सिलेंडर है ये बताओ, अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखता हूँ क्या होता है ये?